Good evening, Tanishka. Good evening, everyone. Piyush, Ishan, Dhruv, Suraj. I hope you have enjoyed your Diwali a lot. Tanishka, I have seen she has enjoyed a lot. I don't know about others. What they did. Good, very good. And some people have also. Good evening, Piyush. Yes, yes, I also enjoyed. I enjoyed in Plutus here also, and I enjoyed at home also. I had great fun in Delhi. So Delhi is decorated quite differently in these times, and I love more closely because I've been here like from like since birth. So I find कि दिल्ली का सबसे best time apart from pollution जिसके लिए दिल्ली इतनी famous not so famous, but apart from that the vibe, the whole spirit, the whole the lightning etc are exceptionally different during this time. तो यहाँ की markets देखने के लिए होती हैं. हाँ. So if whenever you visit Delhi, so please अगर दिवाली के टाइम आप विजिट करते हैं, so make sure you have a look at the markets. ठीक है, चलिए. And I've seen that a lot of people have sent me the assignment also. I think Tanishka has sent me the assignment. So I'll just get some time and I'll check them and give it back to you. किस किसने अटेंड किया था पेपर सैटरडे वाला? किया था आप लोगों ने अटेंड? हाँ, किस किसने अटेंड किया था? नहीं, आपका असाइनमेंट तो आया हुआ है तनिष्का मेरे पास. अच्छा, वो कोई और होगा फिर. कोई और असाइनमेंट भेजा होगा आपने. पीयूष. अच्छा, मैं भी भूल गई थी कि मैंने टेस्ट दिया हुआ है. आपकी गलती. आप ही नहीं भूले, मैं भी भूल गई कि सैटरडे को मैंने टेस्ट दिया था बिकॉज आई गेव फिजिकल कॉपी. जो क्लास में स्टूडेंट्स आए थे उनको मैंने फिजिकल कॉपी फ्राइडे को ही प्रोवाइड कर दिया था ऑफ द टेस्ट. और फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई हैव अपलोडेड इट ऑन द पोर्टल. ठीक है, जैसे आप भूल गए कि टेस्ट था वैसे मैं भी भूल गई कि मैंने कोई टेस्ट दिया था. वो तनिष्का का असाइनमेंट आया हुआ था और मेरे मेल पे, तो मुझे याद आया कि आई हैव गिवन टेस्ट. कोई बात नहीं, दिवाली है तो इट्स ओके. एंड सीजन इज गोइंग ऑन. शायद भाई दूज तक इट विल बी यू आर गोइंग टू गेट बिजी. अगर बाद में टाइम मिले तो जस्ट डू इट. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके. हाँ, समय आपका मिला है. एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूंगी. ठीक है, आपका शायद से मिला है. यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, मिला है. ठीक है, और नहीं मिला होगा आई इन्फॉर्म यू. Okay, all right. So far we have done some theories and we have talked about it. कौन सी थ्योरी के बारे में हमने बात किया है? कोई मुझे याद दिलाएगा? We have talked about हेले. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया कि हेले ने कैसे मॉनसून को डिस्क्राइब किया. Then we have discussed about फ्योन. उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया. So there are theories which you call it. जो आपका क्लासिकल थ्योरी है. Then there is a dynamic theory, right? So basically थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. हमने हेले और उनके बारे में बात करा सेपरेटली. पर आपकी जो थ्योरीज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. व्हाट आर दीस टाइप्स आर नोन एज? वन इज योर क्लासिकल थ्योरी, one is your dynamic theory, and another one is your modern theory. ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड है. This is how it has been divided: your classical theory, your modern theory, the dynamic theory, and your modern theory. This is how it has been divided. अब classical theory में you have lot of people who have discussed, for example, हेन है, कोपन है, मिलर है. we'll discuss about all of them, जिन्होंने अलग तरह की थ्योरी दी आपको मानसून का. आपको पता चलेगा कि फ्योन के टाइम पे हमें पता चला कि तिब्बत का जो हीटिंग होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो क्विकली कमिंग ऑन टू दिस थिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम.
first we'll study about classical theory. Do you want to write or do you want me to give the notes? ताकि writing में बहुत time जा रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा time खिंच जाएगा. And I have to discuss. एक चीज होती है कि I have to discuss कि आपको अगर कुछ out of the box भी question आ जाए, तो आपको ये feel नहीं होना चाहिए कि नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा इस बारे में. ठीक है? बताइए, shall I do the writing today or what? या बीच वाले पोर्शन में आपको नोट्स दे दूं? नोट्स आर ऑल्सो फाइन. ठीक है, थोड़ा सा क्विकली लिखना फिर थोड़ा सा. हाँ, पहले बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की. ठीक है, क्लासिकल थ्योरी किसने बताया? क्लासिकल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सर एडमंड हेले. मुझे बस स्ट्रक्चर करना है आपके इस चीज को. हेले के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको ये नहीं पता होगा कि वो क्लासिकल थ्योरी है. अगर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल व्हाई आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी विद यू, बिकॉज अगर हेले आ जाता है डायरेक्टली यू विल बी एबल टू राइट कि हाँ ये चीजें उन्होंने बोला था और ये क्रिटिसिज्म था. बट अगर क्लासिकल थ्योरी आ जाता है तो यू वुड नॉट नो दैट इट वाज हेलेस वर्क which was classical theory. सिर्फ हेले का नहीं था एक्चुअली, दैट्स व्हाई हम सिर्फ हेले को इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते. देयर वर अदर पीपल आल्सो लाइक हेन, पोपन एंड मिलर. हेन, पोपन एंड मिलर ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो यू शुड नो. इतनी बात आपको पता है, सेम चीज है, सिर्फ ये वाले स्कॉलर्स ऐड कर लीजिए इसमें. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू टेल. आपको बात समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? जो हेले ने बोला वो क्लासिकल थ्योरी ही है, बट द पॉइंट इज देयर आर अदर पीपल आल्सो हु अलाइन विद दिस थॉट हु वर हेन, पोपन एंड मिलर एज वेल. सो आपको ये थ्योरी क्या कहलाएगी? क्लासिकल थ्योरी. अब आप ये डू नॉट गेट सरप्राइज इन द एग्जाम इफ इट कम्स दैट व्हाट इज अ क्लासिकल थ्योरी एंड व्हाट आर इट्स क्रिटिसिज्म, एंड देन यू विल रियलाइज कि हमने तो क्लासिकल थ्योरी करी ही नहीं. सो ओनली फॉर दैट थिंग आई एम ट्राइंग टू गिव यू द टर्म क्लासिकल थ्योरी. ठीक है, सेम चीज है जो हेले ने बोला, सब कुछ सेम है उसके अंदर. नेक्स्ट आ जाते हैं डायनेमिक थ्योरी. ठीक है, जो आपको मैंने बताया था दैट द व्हाट फ्लोन हैज गिवन इट इज अ डायनेमिक थ्योरी. हैव यू मेंशन दिस? इफ यू हैव नॉट मेंशन दिस प्लीज मेंशन इट. इट इज अ डायनेमिक थ्योरी. और आज हम करेंगे क्या? रीसेंट थ्योरी विच यू आल्सो कॉल इट एज मॉडर्न थ्योरी. ठीक है, डन. ओके, now come recent to the recent theory which is your modern theory. Write down the heading. दोनों में से कुछ भी आए so you should know this. Write down. With the advancement of satellite technologies, write down. With the advancement of satellite technology, comma, and weather recording instruments, comma, a large and varied data, a large and varied data is now available to process through computers, comma, develop models and arrive at a very precise results about weather and climate. About weather and climate. The recent theory to the origin of monsoon
I'll repeat. The recent theory, the recent theory to the origin of monsoon is observed on observations, is observed on observation concerning upper air circulations, upper air circulations, comma, temperature condition over Tibetan plateau, temperature condition over Tibetan plateau, comma, jet streams, comma, oceanic water circulation, comma, the occurrence of El Nino and La Nino, the occurrence of El Nino and La Nino and southern oscillations, and southern oscillations. ठीक है? We'll write about all this. पहले आप heading में डालेंगे the monsoon expedition. I think we have discussed about monsoon expedition. Have we done the P. Koteshwaram Swaram and the Professor H. Fionn suggests that Tibetan plateau is a source of heat? We have written that. Now, लेकिन हम फिर से एक बार इसको लिखेंगे in the classical or the recent theory. में लिखिए एक बार. Write down. The monsoon expedition. पहली heading डालेंगे. The monsoon expedition. The monsoon expedition. Monsoon expedition में क्या लिखोगी? Write down. To understand the causes and mechanism of monsoon, to understand the causes and mechanism of monsoon, an Indo-Soviet joint expedition and Indo-Soviet joint expedition and Indo-Soviet joint expedition was carried out in 1973. Indo-Soviet joint expedition was carried out in 1973. Full stop. The monsoon expedition, comma, particularly known as MONEX. The monsoon expedition which was particularly known as MONEX underline करेंगे MONEX को, which was particularly known as MONEX, was jointly organized in May-July 1973. Was jointly organized in May-July 1973. ठीक है? Full stop.
इसका मेन लाइन क्या था that you have to remember, write down. Dr. P. Koteswaram. Doctor, I know it is repetitive, we have done in the previous class also, but you have to have a complete note. अगर आप recent में बात कर रहे हैं, Dr. P. Koteswaram and Professor H. Fionn discussed the importance of heating of Tibetan plateau. It's A only. Tibetan plateau. Tibetan plateau. ठीक है. अब आपको पता है what was the importance of it, क्या हमने डिस्कस किया था, you know all that. ठीक है. अब रीसेंट थ्योरी में नेक्स्ट लिखेंगे, मतलब इसी में सेकंड पॉइंट करके लिखेंगे jet streams, because they talked about jet streams, which other dynamic theory and classical theory have forgotten. Jet streams and the monsoon. Jet streams and the monsoon. देखिए, jet streams are prominent movement. This is the definition. Jet streams are prominent movement in upper layer wind flows. Prominent movement in upper layer wind flows. In upper layer wind flows. Full stop. These streams are concentrated, comma. These streams are concentrated, comma. Meandering bends of these streams are concentrated, comma. Meandering bend of geo, write down geostrophic winds. I'll explain you the whole part. Geostrophic winds blowing at a speed of 300 to 400 kilometer per hour. Blowing at a speed of 300 to 400 kilometer per hour. ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, जेट स्ट्रीम्स आर प्रोमिनेंट मूवमेंट इन अपर लेयर. ठीक है, सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है जेट स्ट्रीम्स का कि वो हमेशा इट विल बी ऑन द अपर सर्कुलेटरी मोशन, अपर एयर मोशन. वो कभी आपको नीचे नहीं दिखेगा. इट विल बी ऑलवेज एट अ ग्रेट हाइट. कितना हाइट होता है आपका ट्रोपोस्फेयर का? 12 टू 13 किलोमीटर मैक्स. ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको? 12, 11 से लेकर 13 तक के बीच में. दिस इज योर अपर सर्कुलेटरी मोशन. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने यूज किया है मियांड्रिंग. मियांड्रिंग मींस इट विल नॉट गो लाइक दिस वेवी, या फिर इसको रॉसबी वेव्स भी बोलते हैं, रॉसबी वेव्स, बट it will always be like this. Meandering means changing its path like this. It will be always, जैसे आपका रिवर्स meander करता है वैसे ही they will be also meandering. Look at the speed that this is having. This is upper circulatory motion. कितना speed है? 300 to 400 kilometer. Such a great speed that they are moving into.
300 to 400 kilometers is such a great speed. So jet streams are the, write down, jet streams are the general circulation of, jet streams are the general circulation of upper atmosphere, similar to planetary winds, similar to planetary wind system in the surface of the earth, similar to planetary wind system in the surface of the earth. ठीक है, planetary systems क्या है, for the people who do not know, the same thing which I told you. जैसे ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, and these are your सब ट्रॉपिकल. अब इसके बीच में जो विंड ऐसे ब्लो कर रही, दीज आर योर ईस्टर्लीज. फिर आपका क्या आएगा, दे विल बी वेस्टर्लीज एंड देन पोलर ईस्टर्लीज अगेन. तो ये वाली विंड्स जो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज प्लैनेटरी विंड्स. और जो ऊपर है विंड्स, उनको क्या बोलेंगे, द विंड्स जो आपकी ये वाली विंड्स है जो ऊपर एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलेंगे, अपर सर्कुलेटरी एयर सर्कुलेशन या अपर सर्कुलेटरी विंड सिस्टम. और इन दोनों का ये डिफरेंस है, ये हायर पे है, ये सरफेस पे है, दैट इज द डिफरेंस. डिफरेंस लिखने के लिए भी मैं आपको दूंगी सो दैट यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि जो आपकी प्लैनेटरी विंड्स है व्हिच इज एट द सरफेस, उनका हाइट इतना ज्यादा नहीं है, बट दिस विंड्स आर हैविंग सच अ ग्रेट हाइट. इसका स्पीड देखिए और इसका स्पीड देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है, दे आर नॉट मियांडरिंग, दे आर मियांडरिंग, राइट. So between jet streams are general circulation of upper atmosphere similar to planetary wind system in surface of the earth, full stop. Between equator and about 30° north, between equator and about 30° north, comma, in which there are easterlies, ब्रैकेट में लिखेंगे trade winds, in which there are easterlies, ब्रैकेट में लिखेंगे trade winds at lower level, at lower level, and westerly winds aloft, westerly winds aloft, 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 full stop. ठीक है, write down. In middle zone between 30° to 60°. अब 30° to 60° कौन सा मीडियम है आपका, which is your subtropical high pressure belt. यहाँ तक क्या है आपका, this is your, देखिए आपको समझना बहुत जरूरी है, that you should have this in mind. ये आपका इक्वेटर है, जब मैं आपको लिखाऊं तो प्लीज मेक श्योर आप डायग्राम को रेफर कर रहे हो. दिस इज योर 23.5° नॉर्थ, दिस इज योर 60° नॉर्थ, दिस इज योर 90°. अब ये देखिए ये आपका इक्वेटर है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. अब यहां से लेकर दिस वन, जो 35 से क्या स्टार्ट होगा, योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. फिर यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर, और यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर. ठीक है, ठीक है, राइट डाउन. इन मिडिल जोन बिटवीन 30° एंड 60° नॉर्थ. अब 30° देख लीजिए कहाँ पर है, दिस इज योर 30°, ये वाला, एंड 60° इज दिस. ठीक है, अब इमेजिन करिए ये वाला, यहाँ पे वेस्टर्लीज चलेंगे लाइक दिस. देखिए बिटवीन 30°, in the middle zone between 30° and 60° north, comma,
in which there are westerly winds, in which there are westerly winds at the earth's surface and easterly winds aloft. Easterly winds aloft means ये उसके ऊपर, यहाँ पे जब यहाँ से पोलर हाई प्रेशर से winds आएंगी, ये ईस्टर्लीज होंगी, पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं इनको स्पेसिफिकली, aloft. ठीक है, written everyone? Now write down. Finally, between 60° north and north pole, finally between 60° north and north pole, where the surface winds are easterly, आप इनको polar easterly लिख सकते हैं, just to differentiate. Where surface winds are easterly, bracket में लिख लो polar, full stop. The easterly jet streams was first inferred by, write down, easterly jet streams was first inferred by Koteshwaram and Krishna, Koteshwaram and Krishna in 1952. In Koteshwaram, inferred by Koteshwaram and Krishna in 1952. Again, I am repeating. The easterly jet stream was first inferred by Koteshwaram and Krishna in 1952. Full stop. Write down the core means the main the this Rossby waves. Where are they present? Write down. The core of easterly jet. The core of easterly jet is at 13 kilometer. The core of easterly jet is at 13 kilometer, while that of westerly jet, while that of westerly jet is at 9 kilometer. The core of easterly jet is at 13 kilometer and westerly jet is at 9 kilometer. ठीक है? See, there right now I just for the monsoons I'll discuss only two type of jet streams. One is your tropical, your easterly jet streams, जो आपका actually में responsible है for bringing the winds, for bringing the southwest monsoonal winds inside the interior. ठीक है? Which is your what? Your easterly jet streams. और अभी जो आपको थोड़ा सा you have started feeling cold in different parts of North India is because it is responsible. Who is responsible for this? It is westerly jet streams. या फिर आप उनको क्या बोलोगे? You will call them as subtropical jet streams. कहाँ से आ रही है ये? They are coming from, originating from Mediterranean Sea. This one. Mediterranean Sea. ठीक है? ठीक है? So this is what you have to remember. इसके अलावा भी दो और होते हैं, but we will only consider these two for the monsoons, right? Write down. Jet streams पर कॉमा डाल के लिखेंगे, particularly westerly jet streams, particularly westerly jets plays a decisive role in the origin of Indian summer
monsoon. Jet streams, comma, particularly westerly jet streams, plays a plays a decisive role in the origin of in the origin of Indian summer monsoon. Full stop. Observations reveal that observation reveals that northward push of westerly jet, comma, due to heating of Tibetan plateau, comma, marks the onset of इंडियन समर मॉनसून. इसका क्या मतलब है कि इंडियन समर्स कब आएंगे? जब आपका ट्रॉपिकल जो सब अभी क्या है, अभी देयर इज अ विंटर स्टार्ट होने वाली है. यू हैव स्टार्टेड फीलिंग देयर इज अ ऑनसेट ऑफ विंटर्स. व्हाई? बिकॉज आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैज कम. You have started feeling cold right now. In the evening and the morning you're feeling cold in Delhi, and also in mid times, also in the 12th से पहले you feel that, and या फिर late night you feel there is a cold breeze which is flowing in Delhi. So this is what you start feeling जब आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाता है. और जैसे ही समर स्टार्ट होने वाला होता है, ऑब्वियसली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द इंडियन पेनिनसुला. सो वेयर इट शुड प्रेजेंट? इट जस्ट गोज अबव द इंडियन पेनिनसुला. कहाँ पे चला जाता है? दैट इज व्हाट दे हैव written that it is located, it is northward push हो जाता है इसका of the westerly jet. ठीक है, क्यों? बिकॉज तिब्बतन प्लेटू है स्टार्टेड गेटिंग हीटेड अप बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन. ठीक है, राइट डाउन. कहाँ तक लिखा आपने? मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडियन समर मॉनसून, यहाँ तक लिख लिया. ओके, full stop. As against this, westerly jet stream is located. As against this, westerly jet stream is located to the south of Himalayas, during summer season, the summer monsoon, during summer monsoon. I think I have given a wrong decision. Please, can you tell me till where you have written? क्या लिखा है अभी आपने recently? Ma'am, we have written observations reveal that northward push of westerly jet due to heating of Tibetan plateau marks the onset of Indian summer monsoon. Correct, correct. As After that, again, this westerly jet stream is located to the south of the Himalayas during summer monsoon. no. Write down इसको कर, summer को आप कट करिए, लिखिए winter season. By mistake it has been dictated. Summer को कट करिए, write down winter season. क्योंकि वेस्टर्ली जेट साउथ देखिए, ये हिमालयस है आपके, ये आपके हिमालयस हैं. जैसे ही समर आएगा, आपको क्या पता होना चाहिए? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम शुड नॉट प्रेजेंट ऑन द इंडियन पेनिनसुला. तो क्या होना चाहिए? इट शुड गो नॉर्थवर्ड, ऊपर चला जाना चाहिए. जैसे अभी का टाइम है वेयर द कोल्ड ब्रीज यू कैन फील. सो इसको कहाँ जाना चाहिए? साउथ ऑफ द हिमालयस. तो अभी साउथ ऑफ हिमालयस में है ये, तभी तो आपको फील होगा कोल्ड. ठीक है, full stop. The wind tend to descend along the winds tend to descend में नीचे आना. The winds tend to descend along the northwestern part of India, which descend on the northwestern part of India, on the northwestern part of India,
on the northwestern parts of India, which coincides with the occurrence of western disturbances in the region, which coincides which coincides with the occurrence of western disturbances in the region, comma, common during winter season. Full stop. These disturbances, write down, these disturbances result in occasional rains. These disturbances result in occasional rains, which is highly beneficial, which is highly beneficial, sorry, which is highly beneficial for standing winter crops, for standing winter crops. ठीक है? Now write down the southern oscillation and El Nino. What is the effect of that? I told you that the Indian monsoons are not isolated. They cannot be studied in isolation or in silos. You cannot study this concept because Indian monsoons are highly impacted what is going around in the world. So there is a phenomena which happens between the Peru and between the Australia. I mean, this is Australia, and here you have the Peru, which is a country of South America, and whatever happens here. So El Nino and La Nina. These are the two concepts which you have to study. Anything which happens here directly impacts the Indian monsoon. Okay? Write down the southern oscillations and the El Nino. The southern oscillations and the El Nino. के नीचे लिखेंगे occurrence of weather phenomena at one place. Meteorological observation, write down, meteorological observation reveals that meteorological exploration या observations reveal that there are teleconnections. There are T-E-L-E hyphen and then write down connections. There are teleconnections between occurrences of weather phenomena at one place and its effect over time at another place and its effect over time at another place. Full stop. Based on the premise of teleconnections, based on the premises of teleconnection, the origin of monsoon has been explained. The origin of monsoon has been explained with reference to El Nino, La Nina and Indian Ocean Dipole and Indian Ocean Dipole. सबसे पहले हम लिखेंगे about El Nino and monsoon. Then we'll describe about La Nina and then finally the southern oscillations. We'll do it bit by bit. For now, you have to revise. So for 5 minutes I'm giving you till now. Whatever you have done so far, just revise. Whether it is your क्लासिकल मॉडर्न या कोई भी थ्योरी है, whether it's your the previous chapters, मतलब previous जो हमने करा है, just revise. आपको 5-10 minutes you have to revise so that
जितना भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? अगर कोई डाउट है तो पूछिए एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपको सिर्फ मुझे नॉलेज डू नॉट गिव एन जस्ट फीड इन द फीड ऑफ द कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अभी तक कुछ समझ नहीं आया, प्लीज लिखिए 5 मिनट्स 7 मिनट्स में एंड देन विल रिज्यूम विद इट। अब टेक योर टाइम।
Okay. Any doubt so far? Any doubt so far? Anyone? No, ma'am. ओके, गुड तनिष्का। और किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। इतना इजी टॉपिक भी नहीं है कि आप लोगों को। ठीक है, गुड। तो आप घर पे जाके आप एक बार और देखेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो आप तब भी यू कैन आस्क मी टुमारो। ठीक है, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Soumya is not participating today. What happened? Soumya, Ishan. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मूव करते हैं एलिनो मॉनसून पे, टॉपिक डालते हैं। नो, आई वाज जस्ट आस्किंग दैट ओनली, सौम्या, डू यू हैव एनी डाउट और नॉट? ठीक है, एलिनो और मॉनसून पे मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत प्रिसाइजली हमें ये टॉपिक पढ़ना है, एलिनो एंड मॉनसून। Write down the effect of El Nino on summers, monsoon. The effect of El Nino on summer monsoon is significant. The effect of El Nino on summer monsoon is significant. Full stop. El Nino is a warm ocean current. El Nino, El Nino is a warm ocean current. El Nino is a warm ocean current appearing along the coast of Peru. Appearing along the coast of Peru. Full stop. The literal meaning of El Nino is child Christ or little boy. The literal meaning of El Nino is child Christ or a little boy. And it develops generally in December. And it develops generally in December. Full stop. Peru or Humboldt. Peru or Humboldt. Peru or Humboldt is a cold current flowing through the coast of flowing through the coast of Peru. Flowing through the coast of Peru. Full stop. The appearance of El Nino reverts the condition of the appearance of El Nino reverses the condition of it reverses the condition of Peru current by developing a warm water and moist air condition over Eastern Pacific moist air condition over Eastern Pacific ब्रैकेट में लिखेंगे पेरू कोस्ट
and Peru coast, and cold conditions in western Pacific coast, and cold condition in western Pacific coast, ब्रैकेट में लिखेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ब्रैकेट में लिखेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. Full stop. As a result, Eastern Pacific along Peruvian coast. As a result, Eastern Pacific along. As a result, Eastern Pacific along Peruvian coast in South America records high rainfall. Records high rainfall. You keep on writing. I'll explain you at once. ठीक है? Don't worry. अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, आप बस लिखते जाइए. अभी मैं आपको I'll explain you clearly. Along Peruvian coast, as a result, Eastern Pacific along Peruvian coast in South America records high rainfall, while Western Pacific along Australian and Indonesian coast record drought conditions. Record drought conditions. Full stop. El Nino results, a very important line, and underline this also. El Nino results in weakening of the monsoon. It results in weakening of the monsoon, causing drought conditions, and crop failure in monsoon regions of, and crop failure in monsoon regions of South and Southeast Asia. South and Southeast Asia. Please try to understand this concept clearly. देखिए, here you have India, here you have Europe, Africa, India, here Australia, and here South America. Any doubt? Okay. Now what is happening? This is your Peru coast. This is your, first I need to mention the terms which has been mentioned in the paragraph in order to understand the things. Now when you have to consider the Eastern Pacific, this is your Eastern Pacific Ocean. And you will consider this part as your Western Pacific. Okay? Any doubts in this? Now, you must have heard of the term upwelling and downwelling. Now, when the upwelling happens, upwelling का literal मतलब क्या है? What do you mean? Simple language में समझेंगे. जब नीचे से water, जब आपका the current is coming, it brings the water which is down, which is at the lower level, right? Which is beneath. It brings the water to the upper surface. और जो ऊपर वाला hot water होता है to the lower surface. That is known as upwelling. इसी को ही upwelling कहते हैं. But ये upwelling होगी कैसे? Only when the strong currents will be present here. ठीक है? अगर upwelling होती है, for example, here we have talked about a very strong current which we call it as Humboldt current. Humboldt current has been named on the basis of a scientist, Alfred Humboldt, which we have also discussed in the geographical thoughts.
We have discussed about the geographical thoughts and we have discussed about Humboldt. On his name, this Humboldt current has been named, or you can also call it as Peru. There are two different names of the same current, which is Peru or Humboldt. Now, if the current is strong, or if the current is flowing, or this is present, then what will happen? Upwelling will happen, and upwelling simply means that the cold water which is beneath, अब वो cold क्यों है? Because the sunlight insolation cannot reach after certain level, and that is why you have the chemosynthesis process going on. क्यों हो रहा है chemosynthesis process? Because chemosynthesis process only be done when the sunlight cannot be reached, otherwise photosynthesis होगा. तो फोटोसिंथेसिस तक जब जहां तक सोलर रेडिएशन है वहां तक ठीक है, उसके नीचे यू विल हैव द कोल्ड. आपने पढ़ा होगा थर्मो क्लाइन एक्सेट्रा कि एक लेवल के बाद द टेम्परेचर ड्रॉप्स. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. जब थर्मोट कलर आता है तो क्या करता है, नीचे से जो कोल्ड वाटर है विच कम्स अबव एंड हॉट वाटर गोज डाउन. अगर ये सिचुएशन होती है, आई एम सॉरी, अगर ये सिचुएशन होती है तो क्या होगा, द कोल्ड करंट विल कम अप एट द सर्फेस. ठीक है, अगर कोल्ड करंट होगा तो क्या होगा, दिस विल बी हैविंग अ हाई प्रेशर रीजन, और कंपैरेटिवली यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर. आ रही है बात सबको समझ में? यहाँ पे कैसा होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पे होगा लो प्रेशर. ठीक है, here you will have high pressure, here you will have low pressure. And one more thing which is important here to understand कि यहाँ पे जो कोल्ड करंट जो आपका हॉट होगा, जो पहले आपके हॉट करंट है, आपका हॉट सरफेस वाटर है, अगर इंसोलेशन आ रहा है टॉप वाटर टॉप सरफेस पे तो ये हॉट ही हुआ ना. अब दैट विल ऑल्सो गो टुवर्ड्स द वेस्ट. क्यों वेस्ट साइड, वेस्ट पैसिफिक की तरफ जाएगा वो? हु कैन टेल मी दिस थिंग? पीपल हु हैव read GS thoroughly, ये वेस्ट की तरफ क्यों जाएगा? Ma'am, ये because it हाँ, moves from high pressure to low pressure region. वो तो है ही, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में बात करेंगे, पर व्हाई, व्हाट इज द टेंडेंसी, व्हाई द वार्म करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस? Conduction, no. Piyush, not conduction. There are 4-5 factors because of which the current are happening. The one is rotation of the earth, and because of the rotation of the earth, what will happen? Counter equatorial current. Ma'am, Coriolis effect. कोरियोलिस इफेक्ट अलग है तनिष्का, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा. मैं ही बोल रही हूँ कि ये वाला करंट, वार्म करंट इस तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि अर्थ मूव करती है ऐसे, लाइक दिस, और उसके ऑपोजिट क्या एक्ट करेगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट. तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे जो हॉट वाटर है वो इधर जाएगा, इट विल गेट कलेक्टेड नियर द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तब भी यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, रिलेटिवली तो बन ही रहा है लो प्रेशर, इसलिए भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वार्म वाटर है दो तरीके से कोल्ड हो रहा है. एक तो वार्म वाटर जो अपर सरफेस पे इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट की वजह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा नियर द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वी हैव सीन एज इट रोटेट्स लाइक दिस, देयर इज ऑपोजिट फोर्स व्हिच इज वर्किंग, व्हिच यू कॉल इट एज इक्वेटोरियल काउंटर करंट. इस वजह से यहाँ पे इट विल गेट कलेक्टेड, और यहाँ पे क्या होगा, अपवेलिंग हो जाएगा, अपवेलिंग होके नीचे से कोल्ड करंट, और यहाँ पे तो यहाँ पे एयर क्या होगी, डिसेंट होगी, हाई प्रेशर रीजन बन गया. फिर अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, ये अपर लेयर की बात करी, मैंने ओशन की बात नहीं करी है. आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी, अपर लेयर की बात करी, यहाँ पे मैं ओशन की बात करी कि वाटर तो उसके थ्रू ही जाएगा ना. So now high pressure to low pressure, it will, the cycle will be like that. इस साइकिल को, कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं वॉकर सेल. इस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वॉकर सेल. और अगर ये वॉकर सेल ऑपोजिट हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बिकॉज जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं एल लीनो वाला जो पढ़ रहे हैं वो तब होगा जब ये ऑपोजिट हो जाएगा. ऑपोजिट मतलब
अब ये यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे ना करके इट विल बी लाइक दिस। कितने लोगों के पास समझ में आ रही है? आई होप, आई नो दैट देयर वुड बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, पर अभी अगर आपको 50% भी समझ आ गया तो माय हाफ ऑफ द वर्क इज डन। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? एटलीस्ट 50%। यस, पीयूष सिंह, यस, तनिष्का सिंह, यस, सौम्या आपको भी आ गया, ईशान आपको आया? नहीं आया तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन। गुड। देखिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे और अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करेंगे। ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक है, ये आपको पता है, ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक है। अभी हम बात करेंगे करंट के बारे में। किस करंट के बारे में बात कर रहे हैं? हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, दोनों नाम ले सकते हैं, हम्बोल्ट और पेरू। कहाँ ओरिजिनेट होता है पेरू? इट इज ओरिजिनेटिंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, पेरू, पेरू कोस्ट के पास। नाउ what this Peru current does, what is the significance of this Peru current? It upwells, upwelling, it helps in the upwelling process. तो पहले शुरू से शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 1 ऐसे करते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे कैसा कलेक्शन होना चाहिए। अगर सन की रेस पड़ रही है तो यहाँ पर जो अपर लेयर है, जो अपर सरफेस है, वो वार्म होना चाहिए। इतनी बात से आप एग्री करते हैं कि अपर लेयर जो है वो वार्म होनी चाहिए, क्योंकि जो सरफेस इंसुलेशन है वो कहाँ पड़ रहा है? एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है। लेकिन जो नीचे वाला लेयर होगा वो कैसा होगा? दैट विल बी कोल्ड, obviously colder, because insulation cannot go beyond a certain limit, beyond a certain level of the water. It is totally what it does not, insulation doesn't go inside, the heat, the light doesn't go inside, so it is colder, ठीक है, this is warm. अब now as compared to this part is more warmer. Why? Because this water will go and get collected here. That is why. You will ask him, why it will get collected there? Because of the rotation of the earth. Rotation कैसे हो रही है? इस तरह से, west to east, ठीक है। Now your counter equatorial current, कोई भी फोर्स का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, नहीं होता है? तो ये ऑपोजिट रिएक्शन है। तो अगर अर्थ ऐसे मूव कर रही है तो वाटर यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अर्थ ऐसे मूव कर रही है, वाटर ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर हियर, व्हिच यू कॉल इट एज वार्म वाटर, व्हिच विल गेट कलेक्टेड हियर, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, साथ ही साथ चल रहा है ये भी प्रोसेस, that your Humboldt current which is here, which is your cold current. Humboldt current कैसा करंट होता है? कोल्ड करंट होता है, नीचे से आ रहा है आपका। So cold current, what it will do, it will upwell, upwelling में हेल्प करेगा, नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे it will get collected और hot water will go down. So it will create a region of high pressure here. यहाँ पे high pressure region हो गया और यहाँ पे low pressure region हो गया, ठीक है। अब एयर विल डिसेंड ओवर हाई प्रेशर रीजन, डिसेंड मतलब एयर नीचे आएगी एट द हाई प्रेशर रीजन और यहाँ पे लो प्रेशर पे ऊपर जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज द सेल दैट इट विल मेक, व्हिच यू कॉल इट एज वॉकर सेल। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आप देख भी सकते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, बिकॉज इट इज असेंडिंग, आपको हमेशा मैंने बोला है that low pressure पे हमेशा ascend करेगा air. Ascend means it will bring lot of rainfall. So there will be lot of rainfall happening on the eastern coast of Australia. Eastern coast of Australia, there will be lot of rainfall.
एंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बारिश नहीं होगी. And upwelling is very good for the Peru people. Why? Peruvian coast, Peruvians के लिए, Peru की people के लिए, citizens के लिए it's going to be a very good time. Why? Because upwelling always bring the fishes at the surface. और fishes ऊपर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? They will be able to have good trade. ठीक है? They will be able to capture more fishes there. Then फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ सम रीजन हम्बोल्ट करंट नहीं आता है. अब ये क्यों नहीं आता है उसका अभी भी क्या चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है. वी डोंट नो, nobody knows why sometimes Humboldt current does not come. The research work is still going on and people are trying to figure out this thing. Researchers are trying to figure out. We do not know the reason as of now that why this Humboldt current sorry this trade winds. यहाँ पे कौन सी winds आ रही है पहले मुझे आप ये बताइए. कोई मुझे बताएगा कौन से विंड्स आ रही है यहाँ पे. ये साउथ में हो रहा है ना सब कुछ, तो क्या आएगा. ये ईस्टर्लीज है ना, राइट. ईस्टर्लीज तो हुआ, यहाँ से ईस्ट से तो ओरिजिनेट हो रहा है. ये 0 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री साउथ. आ रहा है समझ में. इसको इक्वेटर मान के चलिए, ये इक्वेटर है. ये 0 से 30 डिग्री साउथ यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है. अभी भूल जाओ क्यों कैसे क्या. ठीक है, ये कौन सी विंड्स है आपकी, ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज. आप ये देख रहे हैं ये किसको, अगर यहाँ पे मेरा इफ साउथ अमेरिका इज हियर तो क्या कर रहा है ये, इजंट इट ट्राइंग टू एक्सेलरेट द हम्बोल्ट करंट. अगर ये स्ट्रांग होगा तो आपको नहीं लगता हम्बोल्ट करंट भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए किस तरह से है. दिख रहा है डायरेक्शन, कैन यू सी द डायरेक्शन. सो हम्बोल्ट करंट भी नीचे की तरफ से आ रहा है लाइक दिस. कैन यू सी द डायरेक्शन हाउ इट इज मूविंग इट एंड मेकिंग इट मोर इंटेंस. इंटेंसिटी बढ़ा रहा है इसकी. But sometimes for some reason these trade winds do not blow in that manner. And when trade winds do not blow in that manner, the Humboldt current also becomes weak. When Humboldt current becomes weak, then what will happen? The Humboldt currents become weak, then what will happen? क्या हो जाएगा फिर? अपवेलिंग नहीं होगी. अपवेलिंग नहीं होगी तो जो कोल्ड करंट है नीचे वो ऊपर नहीं आएगा. ऊपर क्या रह जाएगा, हॉट करंट, हॉट वाटर. ऐसा हो सकता है hot water will remain here. Obviously some of amount of water will go here. वो सब कुछ होगा, but the kind of intensity यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. Water will only remain here. यहाँ पे रहेगा क्योंकि अपवेलिंग तो हो ही नहीं रही है. Because of cold current weak पड़ गया. आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, because of the weak trade winds happening, the Humboldt current intensity also becomes weak. The upwelling does not happen. ठीक है. अब अपवेलिंग नहीं हो रही है तो हॉट वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा. यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन बनेगा कौन सा, लो प्रेशर. कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर. क्योंकि सिर्फ काउंटर इक्वेटोरियल करंट से बात नहीं चलेगी, बिकॉज उसके पीछे और बड़ा रीजन था, वो था करंट जो अपवेलिंग कर रहा था. अब यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर. तो यहाँ पे कैसा होगा, एयर असेंड करेगी, डिसेंड करेगी, असेंड करेगी, एंड योर वॉकर सेल विल रिवर्स. हाई प्रेशर से लो प्रेशर देखो अभी भी ये सेम चीज है. यहाँ पे होगी बहुत ज्यादा रेन, कहाँ पे, पेरू कोस्ट पे बहुत ज्यादा रेन होगी, और फिशिंग के लिए ये अच्छा भी नहीं है. ठीक है, दे डू नॉट विश कि ज्यादा बारिश हो. हमेशा वो प्रे करते हैं कि देयर शुड बी नो बारिश एट दिस टाइम. सो क्या होगा, दिस इज अ कंडीशन ऑफ एल नीनो. और यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होगी. यहाँ पे कैसी कंडीशन हो जाएंगी, ड्रॉट लाइक. और यही चीज आपका इन्फ्लुएंस करती है इंडियन मॉनसून को. पिछले वाले केस में जब ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश आ रही थी तो इट इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मॉनसून इन अ गुड वे.
इंडियन मॉनसून इस चीज पे डिपेंड करता है। किस किस को ये बात समझ में आई है अब तक? ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ बताइए। Ma'am, how is Indian monsoon influenced by it? मतलब it is, but how? इंडियन मानसून ऐसे इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है अभी, ठीक है। अब आप बात बताइए, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका ड्रॉट लाइक कंडीशंस होगा, तो कैसा प्रेशर बनेगा यहाँ पे? हाई प्रेशर और लो प्रेशर? हाई प्रेशर, करेक्ट। कंपैरेटिवली यहाँ कैसा बनेगा? लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी या यहाँ? इट इज गोइंग टू रेन अ लॉट हियर, राइट। नाउ कम टू मेडागास्कर, कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर, right? It will be weakened. The winds which are coming from, now what will happen? यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है. What will happen? This will blow from here. तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी ज्यादा. डिफरेंस जो है आपका वो ज्यादा नहीं होगा. यहाँ पे अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा? There will be less amount of rainfall which will be happening in India. जब हमारा डिफरेंस, जैसे हाई प्रेशर यहाँ पे इंटेंस होता है और इंडिया के अंदर लो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंस इज देयर इज मोर ऑफ रेनफॉल विच विल बी हैपनिंग, ठीक है। आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू अलग से, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी विच इफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। Probably in the next class I'll explain you that. एक बार ये कंप्लीट कर लें, then I'll definitely explain you what is the reason for that. ठीक है? Done. Write down La Nina and monsoon. La Nina and monsoon. Write down La Nina, comma, the word originates from Spanish. La Nina, the word originates from Spanish. The La Nina word originates from Spanish, meaning little girl. Meaning little girl. Full stop. It is characterized by unusually cold ocean temperature. It is characterized by usually cold ocean temperature in equatorial Pacific. In equatorial Pacific. Full stop. During the period of La Nina, during the period of La Nina, comma, sea surface temperature across eastern coastal Pacific. During the period of La Nina, comma, sea surface temperature during ईस्टर्न कोस्टल पैसिफिक कैसा हो जाना चाहिए बताइए? लो और हाई? हु विल टेल मी? लो Ma'am, it will और हाई? be lower, I guess. वेरी गुड, वेरी गुड. Will be lower than the normal. Will be lower than the normal by 3 degree to 5 degree Celsius. By 3 degree to 5 degree Celsius. Full stop. It has extensive effect. It has extensive effect on the climate of North America. It has intensive effect on the climate of North America
कॉमा, सॉरी नॉट क्लाइमेट, प्लीज क्लाइमेट हटा दीजिए, राइट डाउन वेदर, वेदर इज द राइट वर्ड, वेदर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट डाउन, कॉमा, even affecting Atlantic hurricane season, even affecting Atlantic hurricane season, even affecting Atlantic hurricane season, full stop. La Nina caused by heavy rains over Malaysia, Philippines and Indonesia. लालीना कॉस्ट हैवी रेन्स, कहाँ कहाँ कॉज करता है हैवी रेन्स? हर जगह। लालीना अगर देखिए कैसे इफेक्ट कर रहा है, अभी आप सिर्फ टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ये समझना है अगर लालीना होगा between the East Australia and your Peru, then the rain in India and Southeast Asian country are also going to be greatly affected, मतलब अच्छी रेनफॉल होगी उस टाइम। और अगर एल नीनो होता है उन दोनों के बीच में तो क्या होगा? ड्रॉट लाइक कंडीशंस। पहले आप ये लिख लीजिए, अभी टेक्निकलिटी कैसे होगा दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर क्लास। ये दोनों चीज लिख लो, हाउ इट अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। राइट डाउन द वेस्टर्न साइड ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक। वेस्टर्न साइड ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक कौन सा पार्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, राइट? वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक। आपको ये बात समझ में आ रही है? वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक मीन्स व्हाट? पैसिफिक का वेस्ट साइड, ये पैसिफिक है, इसका वेस्ट साइड, दिस इज द पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, द western side. Right now the western side of the equatorial Pacific is characterized by warm wet low pressure weather, warm wet low pressure weather, as collected moisture is dumped in the form of as collected moisture is dumped in the form of typhoons and thunderstorm. Right down. The ocean is some 60 centimeter higher. अब higher क्यों है यहाँ पे? I told you because of the equatorial low pressure, equatorial counter current क्या हो रहा है? यहाँ पे collection of water हो जाएगा, कहाँ पे? On this side, तो obviously उसका height बढ़ जाएगा, तो यही बात इसमें लिखी है। The ocean is some 60 centimeter higher in Western Pacific compared to the eastern as a result of this motion. ठीक है, just study and let me know. After this we will do southern oscillation and monsoon. I wanted to cover Indian Ocean dipole also today. I hope we will be able to do it. अभी आप ये रिवाइज करिए and let me know how much you have understood.
कोई डाउट है अभी तक किसी को भी? पूछ लीजिए। Okay. Write down southern oscillations and monsoon. Write down. Southern oscillations. प्लीज ये आज टॉपिक ने जाके प्लीज रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के बस। आई नो दिवाली सीजन इज देयर, बट उससे क्या होगा ना कि जो भी कंफ्यूजन है अभी हट जाएगा, और अभी आप पूछ सकते हैं, बाद में फिर आपको भी याद नहीं रहेगा, एंड आई विल आल्सो लूज अ ट्रैक कि व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इन द क्लास। ठीक है, कुछ असाइनमेंट करें ना करें, आई हैव गिवन यू लिबर्टी कि बाद में कर लेना आफ्टर ये 2-3 डेज का हॉलीडे जो है आपका, आप गए हैं अपने होम टाउन, तो उसके बाद आप कर लेना, बट ये चीज आप एटलीस्ट, क्योंकि कल के लिए फिर आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, राइट डाउन। द सिस्टम ऑफ सदर्न ऑसिलेशन वाज वर्कड आउट The system of southern oscillations was worked out by Sir Gilbert Gilbert Walker. The southern oscillation concept was worked out by Gilbert Walker. By Gilbert Walker, comma, the first Director General of Indian Meteorological, the first Director General of Indian Meteorological Service in 1924. In 1924. Full stop. It is a seesaw pattern. It is a seesaw pattern of meteorological changes. It is a seesaw pattern of meteorological changes that are often observed between Pacific and Indian Ocean. Pacific and Indian Ocean. Full stop. It has been established that when surface pressure is high over Pacific, it has been established that when the surface pressure is high over Pacific, comma, air pressure over Indian Ocean tends to be low. Full stop. Since surface area pressure over Indian Ocean during dry winter season, since surface air pressure over oceans during dry winter season is inversely related to summer rainfall, comma, prevalence of low air pressure over Indian Ocean is a sign of positive southern oscillations. Underline the point which I'm making you right now. The chances of favorable monsoon are generally linked with positive southern oscillations. Full stop. On the contrary, comma,
If air pressure is high, on the contrary, if air pressure is high over Indian Ocean during winter season, comma, it denotes. On the contrary, if air pressure is high over Indian Ocean during winter season, comma, it denotes southern oscillation, which means that coming monsoon will be weak, which means that coming monsoon will be weak. Full stop. Southern oscillation has a period ranging between 2 to 3 years. Between 2 to 3 years. Next line, the intensity of southern oscillation. The intensity of the southern oscillation the intensity of the southern oscillations is worked out by the difference in sea level. What happened? क्या हुआ? एक सेकंड होल्ड करना. हाँ, क्यों क्या हुआ? नहीं है ही नहीं. एक सेकंड होल्ड. So write down. The intensity of southern oscillation is worked out by difference in sea level is worked out by difference in sea level, air pressure, at Tahiti, Tahiti, कॉमा करके लिखेंगे स्टेशन एट मिड स्पेसिफिक and Port Darwin. Where is Port Darwin? Somebody can please tell me. You must have had a discussion of it in international relations. Write down. Port Darwin. A representative of, write down, a representative station of Indian Ocean. A representative station of Indian Ocean. Port Darwin is in Australia. Okay. A representative station of Indian Ocean. Full stop. A negative value of southern oscillation index implies a negative value of southern oscillation index implies
The negative value of Southern Oscillation Index implies low pressure over Peru coast, a low pressure over Peru coast, and high pressure over North Indian Ocean. A low pressure over Peru coast and a high pressure over North Indian Ocean. लो प्रेशर आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स होगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, यहाँ पे यू विल हैव हाई प्रेशर, यहाँ पे होगा लो प्रेशर। जब ये कंडीशन होगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है? पोर्ट डार्विन, जहाँ पे आपने क्या बनाया? यू विल चेक द स्टेटस, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, दिस इज योर पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। हमेशा याद रखना ये कौन सी कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ ला नीना, जब ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश होगी, सिंपल टर्म्स में, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। इसको ऑपोजिट कर दें। शैल आई जस्ट एक्सप्लेन द सेम डायग्राम? इज इट ओके फॉर एवरीवन टू एक्सप्लेन द सेम डायग्राम और शैल आई मेक डिफरेंट डायग्राम क्विकली? सेम, ओके। सो अब क्या कंडीशन होगा? आई एम टेकिंग डिफरेंट कलर ताकि थोड़ा सा समझ पाए। यहाँ पे लो प्रेशर हो गया बिकॉज यू नो, क्योंकि ये हम्बोल्ट करंट वीक हो गया। यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। जब यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, नहीं होगा, तो आई एम नॉट मेकिंग रेन का सिंबल, आई एम जस्ट, यहाँ पे रेन होगा, ठीक है। यहाँ रेन नहीं होगा, कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब यहाँ रेन नहीं होगा, दिस इज योर नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। और ये इंडियन ओशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन क्या लेकर आता है? एल नीनो, व्हिच इज योर ड्रॉट, ठीक है। सो योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वी हैव डिस्कस्ड। Write down the two adverse parameters, negative SOI and El Nino. The two adverse parameters, negative SOI and El Nino, are the cause of weak monsoon phase. Wait. You have not written from the starting. कहाँ से लिखा है आपने? लास्ट क्या लिखा था? Ma'am, we have written till Indian Ocean, high pressure over North Indian Ocean. ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। A negative value of southern oscillation index implies, ये लिखा आपने, प्लीज राइट डाउन। आई एम रिपीटिंग इफ यू हैव नॉट रिटन। A negative value of southern oscillation index implies low pressure over Peru and high pressure over North Indian Ocean during winter season, explaining a poor monsoon phase। अभी विंटर सीजन बार बार क्यों बोल रहा है? हमेशा ध्यान रखना दैट ये जो पूरा सब कुछ सिनेरियो होता है विच हैपेंस इन द विंटर्स, ये सब कुछ विंटर्स में होता है, या एनलिनो हो या लानिनो हो। जब आपका 25 दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द पेरू, ठीक है, इस टाइम के आसपास ही ये सब होता है। और जब यहाँ पे ये सब हो रहा होता है उस टाइम पे दे सेलिब्रेट इन मच बेटर वे, अगर आपका लानिना ईयर हो, जब यहाँ पे बारिश नहीं होती है ऑन द कोस्ट ऑफ द पेरू, ठीक है। ये सब कुछ दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? इंडियंस के हिसाब से दिस इज दिसंबर गोइंग ऑन, तो सॉरी दिसंबर में दिस इज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अब दिसंबर में ही क्रिसमस बनेगा, राइट, 25 दिसंबर, तो इसलिए बार बार विंटर्स यूज किया जा रहा है बीच में, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका मानसून आता है। मानसून कैसा होगा डिपेंड करेगा उनका, हमारा जो विंटर टाइम था उनका वो कैसा गया है। लेकिन सदर्न साइड क्या होगा? सदर्न साइड क्या विंटर होगा है या नहीं? सदर्न साइड में तो समर्स चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं समर्स? क्योंकि आपका जो नीचे आ गया है विच इज कॉल इट एज विंटर सॉलिस्टाइस आ गया है, ठीक है, फुल स्टॉप।
full stop. During winter season, explaining a poor monsoon phase. Explaining a poor monsoon phase. Full stop. There seems to be a close relationship. There seems to be a close relationship between appearance of El Nino and negative SOI. Full stop. The two adverse parameters are the cause of weak monsoon phase. The two adverse parameters are the cause of weak monsoon phase. Full stop. Together, these parameters are known as ENSO, ENSO event. ठीक है, आई एम रिपीटिंग द होल पॉइंट अगेन, पूरा पैराग्राफ वंस मोर अगर आपने कुछ भी मिस किया हो. The system of southern oscillation was worked out by Sir Gilbert Walker, the first Director General of Indian Meteorological Service in 1924. It is a seesaw pattern of meteorological change that are often observed between Pacific and Indian Ocean. It has been established that when surface pressure is high over Pacific, air pressure over Indian Ocean tends to be low. Since surface air high over Pacific, air pressure over Indian Ocean tends to be low. Full stop. Since surface air pressure over oceans during the dry winter season is inversely related to summer rainfall. आपने ये पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा है? Since surface air pressure over Indian Ocean during dry winter season is inversely related to summer rainfall. Prevalence of low air pressure over Indian Ocean during winter is a sign of positive southern oscillation. Full stop. The chances of favorable monsoon are generally linked with the positive southern oscillation. On the contrary, if the air pressure is high over Indian Ocean during winter season, it denotes the negative southern oscillations. Done? Clear? Now you can ask me anything you want to. I'm waiting. I'm waiting for your response.
यस, कैन वी जस्ट कंक्लूड? क्या कंक्लूजन में पता चला आपको? देखिए, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो सिंपल सी, इतनी बड़ी पैरा का क्या कंक्लूजन निकलेगा? अगर आपका यहाँ पे होता है, देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका इंडियन ओशन है, अभी विंटर टाइम चल रहा है, फिर दिसंबर आएगा, नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब ये सोच के देखिएगा, अभी दिसंबर में क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू, योर पैसिफिक ओशन इज गोइंग टू बी, अगर यहाँ पे आपका हाई प्रेशर, कौन से केस में आपका एलिनो आता है, वहां पे जब वहां पे लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर आता है और यहाँ पे लो प्रेशर, ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, या नेक्स्ट या कमिंग क्लासेस, डिपेंडिंग अपॉन कितनी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका हाई प्रेशर है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, दिस इज व्हाट, ये कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन, दिस इज योर पैसिफिक ओशन। अगर वहां पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ऑटोमेटिकली इंडियन ओशन में आपका मेडागास्कर वगैरह के आसपास की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये कैसा है, दिस इज योर एसओआई, कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले आप मुझे ये बताइए। इट्स अ पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, इट्स अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव, ये बताइए। आपने लिखा है, इसको अंडरलाइन करिए, प्रेविलेंस ऑफ लो एयर प्रेशर ओवर इंडियन ओशन ड्यूरिंग विंटर सीजन इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशंस, अंडरलाइन करिए उसको, प्लीज अंडरलाइन इट, द प्रेविलेंस ऑफ लो एयर प्रेशर ओवर इंडियन ओशन ड्यूरिंग विंटर सीजन की बात हो रही है, इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, द चांसेस ऑफ फेवरेबल मानसून आर लिंक्ड विद पॉजिटिव, they are linked with positive southern oscillations, full stop. On the contrary, if the air pressure is high over Indian Ocean during winter season, it denotes negative southern oscillations, which means that coming monsoon will be weak. सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एसओआई होगा तो आपका मॉनसून कैसा होगा, गुड, और अगर आपका नेगेटिव एसओआई होगा तो मॉनसून होगा वीक, सिर्फ इतना कंक्लूजन लिखना है आपको। अब ये जो सदर्न ऑसिलेशंस है, देखिए किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो सदर्न ऑसिलेशन है आर डिफरेंट फ्रॉम योर एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। ये जो उनके बीच में चल रहा है, ये एल नीनो ला नीना है, जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन के, ये यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, ये दिस इज योर सदर्न ऑसिलेशन, दिस इज योर सदर्न ऑसिलेशन। अब ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गुड फॉर अस, अगर नेगेटिव होगा तो वीक मॉनसून, ठीक है। अभी सदर्न ऑसिलेशन मिलाकर एल नीनो और जब सदर्न ऑसिलेशंस मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एनसो, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। दिस इज नोन एज एनसो, यही लिखा है आपने लास्ट लाइन में, दैट द टू एडवर्स पैरामीटर्स, नेगेटिव एसओआई, अगर नेगेटिव एसओआई भी होता है और साथ ही साथ एल नीनो कंडीशन भी होते हैं, तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, वीक मॉनसून बनाते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं, टुगेदर दिस पैरामीटर आर नोन एज एनसो इवेंट। आया समझ में अब? फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट, मैं एक पैरामीटर आप पॉजिटिव वाला समझा दूंगी तो आपको नेगेटिव वाला अपने समझ में आ जाएगा। गुड कंडीशंस बता रही हूँ, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ऑटोमेटिकली लो प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर पेरू पे बहुत अच्छा क्रिसमस बनेगा इन लोगों का,
क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे बारिश होगी। यहाँ पे लो है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लो। अगर ये विंटर सीजन में ये होता है इंडियन ओशन में लो प्रेशर तो पॉजिटिव, ठीक है। उल्टा कर दो इसका, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। आगे समझ में? अब ये कंडीशन इट्स नॉट फेवरेबल, ये हाई प्रेशर है यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो नॉट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, नीचे वाला ऊपर वाला, तो ये मिलाकर और ये साथ में, ये कंडीशन कौन सी ऊपर वाली, एल नीनो, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा योर एनसो, ये प्रॉब्लम, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, इट्स गुड फॉर अस, बहुत अच्छा मानसून आएगा। आया समझ में किसी को? ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच क्लास, प्लीज रिवाइज दिस थिंग, थोड़ा टेक्निकल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके डन। Thank you so much. Thank you everyone.